Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we'll discuss the sternocleidomastoid muscle, a very important muscle of neck. इसमें बच्चों आपको MBBS BDS में यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आगे आएगा. So we'll discuss this muscle. The name is sternocleidomastoid muscle. इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा है. We will discuss it. So this is the actually key muscle of the neck. की मसल बच्चों आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, हर रीजन का कोई ना कोई की मसल होता है. की मसल का मतलब क्या होता है? की मसल इज द मसल विद रिलेशन टू दैट मसल सम अदर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एट दैट रीजन. मतलब उस रीजन की अगर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल नेक, अगर नेक के स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस की बात करेंगे तो अगर मैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस को आइडेंटिफाई कर लूंगा, देन आई कैन आइडेंटिफाई द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द neck also. So this is known as the key muscle of the neck. Why sternocleidomastoid muscle is the key muscle? This is the sternocleidomastoid muscle because this muscle mainly divides our neck, anterior lateral surface of the neck, into two parts. Anterior to this is the anterior triangle and posterior to this is the posterior triangle. और neck के सारे structures, major structures हम इन triangles में पढ़ते हैं. So the major structures present in neck are divided into two parts with the help of this triangle. That's this muscle. That's why this muscle is known as the key muscle. So in this diagram you can appreciate this is the sternocleidomastoid, left side of the sternocleidomastoid, and on right side, specially बच्चे ये diagram रखिए, right side you can appreciate a thin layer. So this thin layer जो आपको पेपर लाइक लेयर लग रही है, this layer covers sternocleidomastoid muscle. This is known as the investing layer of deep fascia. Okay. Actually sternocleidomastoid कोई subcutaneous muscle नहीं है बच्चों, subcutaneous muscle नहीं है. The subcutaneous muscle in neck is the platysma. So this muscle fiber, these muscle fibers are the fibers of platysma. ये इसके ऊपर होते हैं, platysma के ऊपर skin होती है, like this platysma. Then we dissected the platysma. Below the platysma we can appreciate this thing. This is the deep fascia. Below that, in between that two layers of this deep fascia, we have sternocleidomastoid muscle. Origin, हर मसल को बच्चे हम सेमी स्टाइल में करते हैं. Origin, insertion, then movements, blood supply, nerve supply, and the clinical anatomy. So you can appreciate this structure. This is the manubrium of sternum. Sternum का part होता है manubrium. So this is the manubrium of sternum. This one is the clavicle. Okay, so नाम है sternocleido. Sternum से sternocleido से clavicle. So sternocleidomastoid has two heads, the sternal head and the clavicular head. The sternal head is tendinous. The sternal head is actually tendinous and it will originate from the front of the manubrium, superior part or the lateral part of the manubrium. यहाँ से इसका origin होगा and it is tendinous. The clavicular part or clavicular head is actually musculoaponeurotic. Okay, clavicular is the muscular or musculoaponeurotic part, and this will take origin from the superior surface of the medial two-third. clavicle के बच्चों medial two-third होता है, lateral one-third होता है. So medial one-third, lateral two-third होता है. So medial third के upper surface से इसका origin है clavicular part का, and sternum से sternal part का. The sternal part is tendinous and the clavicular part is the musculoaponeurotic part. In the about lower half of the neck, the two parts will fuse and they will form a single belly. नीचे तो बच्चे दो part में होता है, then they will fuse and they will form a single belly. The insertion में second part, sternocleidomastoid. So sternocleido वाला part हो गया, this one is the sterno,
First is sterno, second is cleidomastoidus. This is the mastoidus. So behind the ear we have mastoid process. So here will the insertion, origin and insertion. Also it will insert on this line. This is the posteriorly we have the superior knuckle line. Yeah, so the insertion of this muscle is, firstly it will insert on the lateral surface of the mastoid process, mainly on the tip of the mastoid process. यहाँ बच्चों mastoid process होती है, इसकी टिप एंड lateral surface पर इस मसल की इंसर्शन है. Then second part, it will insert on the lateral half of the superior knuckle line. So यहाँ knuckle line है बच्चों, knuckle line की medial side medial half, lateral side lateral half. So at this point there is the insertion of the sternocleidomastoidus muscle. Here you can appreciate the origin of the muscle. Here is the origin of the muscle, sternal head. Here is the clavicular head, दोनों का origin हुआ. Then they will form a belly like structure, single belly. This belly will insert on the, here you can appreciate this structure. This is mastoid process. On the lateral surface of the mastoid process and the superior lateral half of the superior knuckle line. So actually बच्चों, the name of this muscle is the sternocleidomastoid-occipitalis. sternocleidomastoid-occipitalis मसल. क्यों हुआ बच्चों? स्टर्नम से ओरिजिन, स्टर्नो, क्लेविकल से क्लेविकुलर, sternocleidomastoid insertion mastoido, and the occipital superior knuckle part is the occipital part. So this is the actual name of this muscle. Okay. Direction of the fiber, upward direction है इनके fibers की. This is the sternal fiber, and इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, clavicular and the sternal fiber. Sternal fiber are superficial fiber and they will extend toward the occipital, that is the superior knuckle line. Okay, sternal angle will extend toward the occipit, but the other angle, fibers, these are the clavicular fiber. Clavicular fibers will like this take origin and they will insert on the mastoid process like this. In this way you can appreciate yellow color sternal and fiber. Sternal fiber बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपवर्ड, clavicular fiber इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. That's why this muscle is an example of cruciate muscle or spiral muscle. Now the belly, the muscle belly, whole muscle belly is thick and narrow in center and it is broad and thin on each side. Lesser supraclavicular fossa. So हमने बोला sternoclavicular muscle. So this is the sternal head and this one is the clavicular head. So near their origin the muscle has two bellies, the sternal head and the clavicular head. Between these two bellies we have a triangular fossa or space. This is known as lesser supraclavicular fossa because this is clavicle, जो clavicle के ऊपर है, so lesser supraclavicular fossa. Behind the clavicular we have the greater supraclavicular fossa. What is the content of this lesser fossa? Lesser supraclavicular fossa contain internal jugular vein, and in this area we can catheterize this internal jugular vein. So इसकी applied anatomy बच्चों ये है कि हम यहाँ पे catheterization कर सकते हैं vein की. What is the arterial supply of this muscle? This muscle बहुत easy arterial supply बच्चों, जहाँ ये present है उसके आसपास की artery ही इसे blood supply देगी. So upper to lower, सबसे ऊपर occipital वाला area है. So first of all upper
पार्ट को सप्लाई आती है बच्चों ऑक्सीपिटल आर्टरी की, मिडल पार्ट को सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एंड लोअर पार्ट को इट इज द सप्लाई फ्रॉम द suprascapular artery or inferior thyroid artery. Then we have the nerve supply. It is very important. Viva question बच्चों. Nerve supply of sternocleidomastoid muscle is the spinal accessory nerve. Nerve number cranial nerve 11. So याद रखना है बच्चों. This is very very important. Favorite Viva question of every teacher, almost every teacher, that the nerve supply of sternocleidomastoid and trapezius is 1 and 1 is 1 and 1 is 11. cranial nerve दो मसल्स को सप्लाई करती है नेक के. these are the sternocleidomastoid and the trapezius muscle, and also sternocleidomastoid has supply from the ventral rami from C1 C2 जो proprioception की sensation लेके जाती है. the action of sternocleidomastoid action is very important. It is favorite viva question of many teachers. So sternocleidomastoid का एक्शन बेटा एक नहीं है, काफी एक्शंस हैं. उनमें से these are we will do one by one. So first of all, if sternocleidomastoid of one side is contracted, किसी भी एक साइड की अगर sternocleidomastoid is contracted, then head will tilt toward that side. contracted side को head tilt करेगा, and the chin will tilt toward the opposite side. मतलब अगर इस डायग्राम को देखें बच्चे, दिस इज sternocleidomastoid ऑफ राइट साइड. सो राइट साइड का sternocleidomastoid अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्चुअली हर मसल का बच्चों वी हैव द ओरिजिन एंड द इंसर्शन, एंड द ओरिजिन इज ऑलवेज फिक्स्ड, मैक्सिमम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड द इंसर्शन इज मूवेबल. सो सेम इन दिस मसल. अगर ये बच्चों याद कैसे करते हैं मसल की एक्शंस को, अगर ये मसल है, एक रोप है, एक रस्सी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये रस्सी ओरिजिन तो फिक्स है, सो इस साइड से फिक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये खींच रही है, तो ये जहां पे इंसर्शन है उसको अपनी ओर खींचेगी. सो द इंसर्शन ऑफ दिस मसल विल मूव टुवर्ड द सेम साइड, जिस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड chin will move toward the opposite side. This is the first section. Then second, if both muscles will contract, अगर बच्चों सेकंड डायग्राम में दोनों साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेम, the origin is fixed, the insertion is movable, so insertion यहाँ थी कहीं, so दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, that's why insertion is movable like this. So head will flex. This is known as the flexion of the head. ये कब होती है बच्चों? फॉरवर्ड लिफ्टिंग फ्रॉम द पिलो. जब हम पिलो से उठते हैं तो भी लाइक दिस मूवमेंट होती है. सो दिस इज डन बाय द sternocleidomastoid ऑफ बोथ साइड, एज वेल एज व्हेन वी बेंड आवर हेड फॉर ईटिंग. जब हम खाना खाने के लिए अपना हेड डाउन बेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, दिस इज द एक्शन ऑफ sternocleidomastoid. नेक्स्ट, इफ द अदर मसल्स ऑफ नेक, दीज आर द प्रीवर्टिब्रल, वर्टिब्रा की साइड वाले जो मसल्स होते हैं, दोज आर फिक्स्ड. If prevertebral muscles are fixed, because बच्चों ये मूवमेंट्स जो फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स थी, ये बाकी मसल्स भी तो इसकी हेल्प कर रहे हैं. Now in third case, if the all other muscles are fixed, this sternocleidomastoid muscle will act as the accessory muscle of respiration and the inspiration. This is the question. Then these are the three. Fourth one is the lateral movement of the नेक. दोनों साइड को sternocleidomastoid नेक की मूवमेंट में हेल्प करता है. सो थ्रू दीज एनिमेशंस हम sternocleidomastoid मसल के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. सो हमने बोला था इफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर एक साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस एनिमेशन में देखिए राइट साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द ओरिजिन एंड हियर इज द इंसर्शन. सो ओरिजिन इज फिक्स्ड, तो इंसर्शन को ओरिजिन अपनी साइड मूव करेगा लाइक दिस. सो जिस साइड का sternocleidomastoid कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हेड विल टिल्ट टुवर्ड द शोल्डर ऑफ द सेम साइड, head will tilt toward the shoulder of same side, and chin is toward the opposite side. So this is the first function of sternocleidomastoid muscle. Secondly, when the both muscles contract together, अगर दोनों सामने से contract करेंगे तो again they will move the head and neck toward the
origin, so this is known as flexion of neck. So ये flexion of neck में help करेंगे जब दोनों इकट्ठे contract करेंगे, and this is the movement when we lift our head from the pillow. So pillow से जब हम movement करते हैं, अपना head move करते हैं, this is the movement. Next, अगर sternocleidomastoids with these muscles जो paravertebral muscles हैं इनके साथ move करता है, तो it will move head and neck toward the same side. So lateral rotation of head and neck. So lateral rotation of head and neck of the sternocleidomastoids. Then अगर same side का contract करेगा तो same side के head and neck down and chin is toward opposite side. And the flexion of neck. So these are major function of sternocleidomastoids muscle. Relation of sternocleidomastoids muscle. This is also important. So again this one is the sternocleidomastoids muscle. हमने पहले बोला it is not subcutaneous muscle, लेकिन ये इतना big muscle है neck का कि we can appreciate this muscle subcutaneously. Subcutaneous muscle नहीं है लेकिन हम इसके action देख सकते हैं बाहर से. So anterior to this superficial relation are important. Superficial to this muscle you can appreciate these nerves. These are the nerve from cervical plexus. So here we have first of all skin and platysma, then the cutaneous nerves. These are the greater auricular nerve, then we have the transverse cervical nerve and the medial supraclavicular nerve. These are the major nerve which are present anterior to this muscle, superficial to this muscle. Then lesser occipital nerve. External jugular vein, it is very important बच्चों. external jugular vein is above, जो आपको कई बार vein दिखाई देती है neck में, that is this vein. This is the external jugular vein. It is superficial to the sternocleidomastoids muscle. Then lymph nodes, and here we have the parotid gland. ये parotid gland है बच्चों, इसकी टिप भी sternocleidomastoids के superiorly होती है, superficially होती है. डीप रिलेशन में हमने sternocleidomastoids का कट सेक्शन लिया. अब इसको अगर हम बात करें लाइक दिस, वी हैव द sternocleidomastoids. इसके अपर, मिडल एंड लोअर में स्ट्रक्चर चेंज होते हैं इसके डीप में. सो अपर में वी हैव द मसल्स, दैट इज वेरी इजी. अपर वाले नेक के मसल, दिस इज द पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिंग मसल. फिर बच्चों डीप नेक के मसल, दीज आर द longissimus capitis muscle and splenius capitis muscle. These are present deep to the sternocleidomastoids muscle. Artery, we have the occipital artery. It is deep to the muscle. In middle part we have the other muscles. These are levator scapulae muscle, scalenus anterior, scalenus posterior and scalenus medius, three muscles. Splenius capitis, inferior valley of the omohyoid muscle. So these are present in inferior, deep to this muscle. Artery, we know the carotid sheath. तो carotid sheath भी इसके अंदर होती है, इसकी डेप्थ में. Here is the area of carotid sheath. Carotid sheath के structures, these are the common carotid artery, internal carotid artery, then vein. Important, we have the internal jugular vein and anterior jugular vein. The anterior jugular vein and internal jugular vein are deep to this muscle, but external is external. External jugular vein is external to this muscle. Nerves, सेम नर्व आ गई बच्चों, कैरोटिड शीथ वाली. वेगस, स्पाइनल सेस्ट्री नर्व, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ansa cervicalis. These are present deep to this muscle. Gland, we know the thyroid gland and the other lymph nodes are present deep to this. So it is easy. थोड़ा सा neck को ध्यान से रखो दिमाग में बच्चों, and you can easily remember these structures. In the lower part, the main muscles are infrahyoid. This is hyoid. Hyoid के नीचे वाले मसल बच्चों, these are the sternohyoid, from sternum to hyoid, then sternothyroid, sternum to thyroid cartilage, scalenus, then the anterior, then we have the omohyoid muscle and the thyroid. These are the infrahyoid muscles, except this one. This is not infrahyoid muscle. Scalenus anterior is muscle of neck, not infrahyoid muscle. Rest four muscle. This is sternothyroid, sternohyoid, omohyoid and thyroid. These are the infrahyoid muscle which are present
deep to the lower part of the sternocleidomastoidus muscle. Then artery is suprascapular artery and the transverse cervical artery, it is also deep. Vein anterior jugular हमने पहली बात की, anterior jugular is deep. Nerve brachial plexus and the pharynx nerve. तो अगर इस स्कीमेटिक डायग्राम में देखें, एंटीरियर या आउटर सरफेस सुपरफिशियल टू डीप, नेक में अगर मैं बात करूं, सो superficially we have skin, then superficial fascia, then we have the external jugular vein superficial to the muscle and the nerves. This is the sternocleidomastoid muscle, upper, middle and lower. So upper के inner side में deep we have the deep muscles, सारे muscles of neck, occipital artery. Middle में we have the organs. Lower में we have the infrahyoid muscles and artery. In middle we know we have the carotid sheath too. So इस डायग्राम से मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए, अदरवाइज इट इज़ ईजी. सो डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक ही लाइन में इसकी डेवलपमेंट है. सो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइडस विल डेवलप फ्रॉम प्री मस्कुलर मास. So this is the sagittal section, this is anterior side, this is posterior side. Here is the occipital myotome. Occipital myotome से बच्चों टंग बनती है. Below the occipital myotomes we have premuscular tissue, premuscular mass. This premuscular mass will develop into two muscles, the sternocleidomastoidus muscle and the trapezius muscle. And this premuscular mass has nerve supply, that is the cranial nerve 11. That's why sternocleidomastoidus as well as the trapezius has cranial number 11 because of their development. Applied anatomy, most important is torticollis or ray neck. Torticolli means, torticolli बच्चों लैटिन वर्ड है, दो वर्ड से बना tortus and colli या column. Tortus means होता है बच्चों ट्विस्ट, इंग्लिश में ट्विस्ट, एंड column या colli is neck. So twisted neck is the torticollis. इसमें क्या होता है बच्चों, इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच एक साइड का स्टर्नोक्लीडोमास्टोइडस जो है उसकी प्रॉब्लम है. हमने अभी बात की थी, इफ sternocleidomastoidus of this side, that is of right side, is contracting, the head will move toward the right shoulder and the chin will move toward the left side. So patient इस position में हमारे पास आएगा. So patient will be present like this. This is a clinical condition in which head will bend on the side of one side and the chin will point on the opposite side. This occur due to spasm of sternocleidomastoidal muscle and trapezius, हमने अभी दोनों की बात की थी, which are supplied by 11 number, cranial number 11. So torticollis are of three type, the spasmodic, then reflex and the congenital. बच्चों इस पे शॉर्ट नोट आता है इसलिए अलग से स्लाइड बनाई है इनकी. सो स्पाज्मोटिक कब होता है, इफ देयर इज एक्सपोजर टू कोल्ड और एक्सेसिव कोल्ड. अगर एक्सेसिव कोल्ड हो या हमारा पिल्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट को सेम जो हमने बात की थी, इस पोजीशन में पेशेंट आता है हमारे पास, यार स्टर्नोक्लीडोमास्टोइडस मसल की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से टॉर्टिकोलस होता है, दैट इज द स्पाज्मोटिक. देन रिफ्लक्स कब होता है, एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड रिलेटेड टू सम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइडस विल कॉज द रिफ्लक्स. कंजेनिटल आपको नाम से क्लियर है, बर्थ डिफेक्ट है, बर्थ इंजरी के टाइम या डेवलपमेंट के टाइम. एंड द परमानेंट टॉर्टिकोलस में अकर ड्यू टू द सबसिक्वेंट इश्मीया ऑफ द मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चों कई बार इसका इश्कीमिया हो जाता है, उसकी वजह से परमानेंट टॉर्टिकोलस हो जाता है. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइडस ट्यूमर,
It is the swelling of the middle third of the muscle, sternocleidomastoid muscle, due to edema or ischemic necrosis, which is known as the tumor. इश्कीमिया हो जाएगा बच्चों इस मसल का, या इसमें कोई एडिमा हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होती है मिडल में. So this is known as the sternocleidomastoidus tumor. स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड्स की और अप्लाइड एनाटॉमी होती है जो हम फेरेंजियल ऑपरेटर्स के साथ पढ़ते हैं. दोज आर द ब्रेंकियल सिस्ट, ब्रेंकियल फिस्टुला. सो उनके लिए आप फेरेंजियल ऑपरेटर्स वाली मेरी वीडियो देख सकते हो. So thank you. If you have any question, any query or any suggestion, you can give me. Thank you.